Okay, good morning. Good morning, sir. Good morning. Great. So today we have the last class of ortho, and then we'll be starting with neuro. Okay. So let's just cover the rest of these the deformities and the conditions. ठीक है, बस हमारा वो बचा है. कल भी हमने यही किया था. We were talking about the conditions, different conditions of the as a whole in the body. From orthopedic point of view, and today also we'll be covering the rest of the conditions. The thing is that we must know कि जैसे अगर ये conditions के नाम अगर आ रहे हैं तो we must know कि what is the name of the condition, what is happening in that, and what are the reasons, the causes and all that for that condition. ठीक है, बस लास्ट ही कुछ conditions है. I don't think आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा मतलब लंबी नहीं चलेगी, and we'll be covering these conditions and then we'll be done with ortho. Okay, I hope first of all the screen is visible to everyone, I guess. Awesome. Okay, great. Okay. So now starting with the first condition, that is the enchondroplasia. Enchondroplasia basically means the thing is कि देखो एग्जाम में अगर ये टर्म आता है enchondroplasia, we must know कि enchondroplasia से मतलब उसमें उस कंडीशन में क्या हो रहा है या क्या देखने को मिलता है. That's why I have put this image here. ये इमेज से आपको याद रहेगा, this is enchondroplasia. Enchondroplasia here we can see it is a dwarfism but not the regular dwarfism. Dwarfism normal regular की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो even the head is smaller than what it normally should be, या फिर मतलब thorax and all that. But here we can see the head and the trunk, that is like उसका जो growth that is normal. मतलब कि एक full grown person अगर होता है तो उसमें भी head and trunk का growth उतना ही होता. But here we can see the arms and the legs, they are not fully grown. So majorly the thing is that it is a bit different from the normal dwarfism. Why? And how? Because the head and the trunk are not grown fully, are grown fully here. ठीक है, वो उनका normal growth है, लेकिन if we talk about the growth of the arms and the legs, that is not grown fully. And that's why, and it is majorly, it has to do with the ossification process. तो जो हम पढ़ते हैं cartilaginous end plate, which is responsible for the increase in the length of the long bones, so that is majorly responsible here. And because of that we can see this happening here. ठीक है, तो we can see this caused by failure of normal ossification of bones, mainly the long bones. ठीक है, it is resulting in dwarfism, but a type of dwarfism where only the arms and the legs are shortened, that is called as enchondroplasia. Growth of the trunk is not much affected. The trunk and the head, it is not much affected, and as much as limbs and all that. Okay, and that's why it is disproportionate. It is not proportional, it is disproportionate. Okay. um, okay, ठीक है. तो now coming up to this thing, तो we can see this कि it is an autosomal dominant. Again, some of the potential questions for the exam कि autosomal dominant inheritance है ना. It means that it is autosome, it is not sex linked है ना. तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स है, it has to do with that, not with the sex chromosome है ना. एंड इसके अलावा इट इज़ डोमिनेंट, तो इट इज़ नॉट रिसेसिव. डोमिनेंट मीन्स कि इवन अ सिंगल एलील, अगर मतलब जो पेयर है, पेयर में से किसी एक के पास भी अगर वो एलील प्रेजेंट है उस कंडीशन के लिए, तो इट मीन्स दैट द कंडीशन विल बी प्रेजेंट इन द पर्सन. लेकिन अगर रिसेसिव होता तो इन डैट केस दोनों पे होना ज़रूरी था, तभी ये कंडीशन उस पर्सन में प्रेजेंट हो पाती. तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि दैट it is a dominant condition. तो autosomal dominant condition seen here. And if the height is smaller, तो we can see कि ये एक नॉर्मल रेगुलर देखा जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द लंबर स्पाइन एंड द पेल्विस, that there is exaggerated increased lumbar lordosis, there is a wider pelvis seen in case of in these conditions. Why? मतलब mostly even ये general एक रेगुलर ट्रेंड भी देखा जाता है कि जैसे वी से दैट फीमेल्स हैव वाइडर पेल्विस देन मेल्स. तो इसके लिए रीज़न ये बोला जाता है दैट मोस्टली वी सी दैट इन अ जनरल सेंस दैट जो फीमेल पॉपुलेशन की अगर हम हाइट देखते हैं एंड मेल पॉपुलेशन की अगर हम हाइट देखते हैं, वी सी दैट देयर इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस ऑफ हाइट है ना. तो मतलब हाइट में मेल पॉपुलेशन हैज़ मोर हाइट देन फीमेल पॉपुलेशन जनरल सेंस में. तो that is also said to be one of the reasons why there is increased lumbar lordosis and increased pelvic you can say width
है ना, pelvis वाइड ज़्यादा है फीमेल्स में, मतलब दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, कैन बी वन ऑफ द रीजंस. लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट दिस हेयर एज वेल, दैट जितनी हाइट कम देखी जाती है उतना ट्रेंड में देखा जाता है कि लंबा लॉर्डोसिस ज़्यादा है एंड पेल्विस का विड्थ ज़्यादा उतना देखा जाता है. ठीक है. तो all these things and these can be used as circus jokers and all that. The enchondroplasia, ठीक है, autosomal dominant condition. Okay, now coming up to another condition that is called as osteogenesis imperfecta, mostly happening in children. And we see that osteogenesis, bone formation जो है, that is imperfect, है ना, bone formation imperfect हो रहा है. तो tendency of, so because of that, मतलब if a child has this condition where there is osteogenesis imperfecta, so we can see this, that the child is having this weak and brittle bones. So bones become weak and bones become brittle. Okay, so that's why even with a small amount of force the bone can easily break. तो ऑलमोस्ट आगे काफ़ी कंडीशंस में हम देखेंगे, इवन डायफिजियल एक्लेसिस हो गया, ऑस्टियोपेट्रोसिस में भी हो गया, इवन इवन ओल्डर इंडिविजुअल्स में ऑस्टियोपोरोसिस में भी हो गया. फोर्स आ रहा है, फोर्स की वजह से बोन ब्रेक कर जा रहा है, लेकिन बोन वीकनिंग का रीजन जो है वो अलग अलग है हर कंडीशन में, एंड दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग देम अंडर अंडर वी आर गिविंग देम डिफरेंट नेम्स, है ना. जैसे जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट में वी सी दैट इट इज अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन. इट मीन्स इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट द बोन इज बिकमिंग वीक. एंड ड्यूरिंग मेनली इट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द ऑसिफिकेशन प्रोसेस. जो चाइल्ड में ऑसिफिकेशन होता है, तो ऑसिफिकेशन के टाइम पे ये देखने को हमें मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द बोन इज नॉट एबल टू become that strong and all that, and because of that the bone becomes weak. तो bone weakening तो सब में देखने को मिल रही है, but the causes or the reason for the weakening of the bone can be different in different conditions. तो यहाँ पे osteogenesis imperfecta में it is mainly the genetic reason, है ना, genetic disorder है. Because of that it can be seen in children, that is called as osteogenesis imperfecta. Mostly it is autosomal dominant, but sometimes it can be seen, it can be seen as autosomal recessive as well. So you can say that variant of this, है ना, that can be a severe variant of this condition, that can be autosomal recessive as well. लेकिन mostly maximal condition अगर हम देखते हैं, that is autosomal dominant. Okay, again the bone is becoming weak and all. Likewise, we can talk about diaphyseal eclasis as well. Diaphyseal eclasis means in this particular condition again a genetic disorder. जैसे हमने पिछले दो देख लिए, पिछले दो में भी genetic disorder था. This is again a genetic disorder where it is again autosomal dominant disorder. But इस condition में क्या हो रहा है? The bone is not going into any kind of fracture or weakening, but mostly we see this deformity at the metaphysis. So metaphysis में we see that it becomes broadened, and there are this cartilage capped bony outgrowths from metaphysis of long bones and some of the flat bones. So mostly you can see that bony outgrowths are seen on the metaphyseal region. देखो नॉर्मल मेटाफाइसिस की अगर हम बात करें, इट कैन बी मे बी लाइक दिस, है ना, कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है. बट डिस्टल फीमर की अगर हम बात करें, इट हैज बिकम अ बिट ब्रॉडन्ड, है ना, काफ़ी ब्रॉडन्ड मेटाफाइसिस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रम्पेट शेप्ड मेटाफाइसिस. ट्रम्पेट आई थिंक सबने देखा होगा. ट्रम्पेट इज बेसिकली अगर इमेज आएगी, है ना, इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ट्रम्पेट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मतलब मुंह से बजाते हैं ना, दैट अगेन लुक्स लाइक दिस, है ना. मतलब एक पार्ट उसका बहुत नैरो होता है, दूसरा पार्ट बहुत वाइड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रम्पेट. तो ट्रम्पेट शेप्ड मेटाफाइसिस इट बिकम्स, है ना, इट बिकम्स लाइक ट्रम्पेट शेप्ड. तो अगेन दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. ट्रम्पेट शेप्ड मेटाफाइसिस. ओके, trumpet shaped metaphysis in case of diaphyseal eclasis, autosomal dominant disorder, where the main the deformation is seen as at the metaphyseal region, and where there is this bony outgrowth seen, that is called as diaphyseal eclasis. So till now we have talked about the achondroplasia, again a dominant autosomal dominant disorder. Osteogenesis imperfecta, bone becoming weak, autosomal dominant, and because of that we are seeing this weak and brittle bones. Diaphyseal eclasis, the metaphysis becoming broader, है ना, metaphysis becoming broadened, and autosomal dominant again. But here we can see this is trumpet shaped disorder, trumpet shaped metaphysis we can say ना, मतलब trumpet shaped metaphysis हमें देखने को मिलता है. This term is really important. Okay, coming up to osteopetrosis. Osteopetrosis is it is also called as marble bone disease, and
इसका अगर आप एक्सरे देखते हो ना, तो एक्सरे में यू विल सी कि बाकी सारी बोन विल बी नॉर्मल, रेस्ट ऑफ द बोन विल बी नॉर्मल, बट इन बिटवीन यू विल सी दैट दीज ब्राइट पैचेस, मतलब वाइट पैच, आपको ब्राइट वाइट पैच देखने को मिलेगा बीच बीच में. इट मीन्स दैट एट दोज पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बोन हैज बिकम मच हार्डन, मतलब मच हार्डन, ठीक है, तो काफ़ी हार्ड देखने को मिलती है बोन. तो बिकॉज ऑफ दैट, सिंस द बोन हैज बिकम वेरी हार्ड, तो वी कैन से द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बोन इज लॉस्ट. जो नॉर्मली हमारे बोन में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चिल्ड्रन में ऑफकोर्स ज़्यादा बोन फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दैट green stick fracture in children. Adults में the flexibility decreases severely, but in case of osteopetrosis there is almost no flexibility of the bone. It means bone के ऊपर अगर force आता है, तो bone like it can't bear even a small amount of you can say distortion, and because of that now the bone can break. So that is called as brittle bone disease, ठीक है, तो इसको हम brittle bone disease भी कहते हैं. The bone becomes brittle, just like a glass, you can say. एक ग्लास होता है, ग्लास इज हार्ड स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा भी अगर उसको हम फोर्स पुट करेंगे इट विल ब्रेक इजीली. दैट्स वाई लाइक समथिंग लाइक दैट हैपेंस इन द बोन इन केस ऑफ osteopetrosis. So you can call it as marble bone disease or brittle bone disease, or that is osteopetrosis, ठीक है. Okay, again autosomal dominant. So we can see this key, all these conditions are autosomal dominant only, or autosomal dominant condition. Okay, so now we can see this key. Just give me a second. Okay, okay, that is osteopetrosis. Now coming up to the next one, that is the Paget's disease. Paget's disease or osteitis deformans. Paget's disease में basically क्या हो रहा है? Again, here also we can see that the bone becomes weak and all, but okay, so we can see this. It is characterized by progressive tendency of one or more bones to bend, get thickened, and spongy. So mainly the thing that is happening here is that osteoclastic activity is much higher than the osteoblastic activity. So in case of Paget's disease, या फिर इसको पेजेट्स बोन डिजीज कहते हैं, पीबीडी कह सकते हैं इसको, पीबीडी, और यू कैन कॉल इट एज ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस. तो यू कैन से दैट द ऑस्टियोक्लासिस, द बोन रिजॉर्प्शन इज मच हायर देन बोन फॉर्मेशन. ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी से ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है. तो दैट्स वाई वी कैन सी नाउ द बोन बिकम्स मच वीकर एंड वो सब, एंड बोन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. So that's why the bone becomes spongy and all. The bone becomes weak. Yeah? Mostly happening in case of in tibia, and the bone is soft and vascular in initial stages, but becomes dense and hard later. So after some time, we can see that there is this force coming up on the bone, and because of that, the trabeculae they align themselves in certain way. Because of that, the bone becomes hardened, but eventually we see that the bone resorption process is much higher, and because of that now the bone is weak. That is called as the Paget's disease or osteitis deformans, mostly happening after 40 years. देखो इसमें इसमें वही सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी है. करने को तो पूरा का पूरा पैराग्राफ डाल दो इसमें, लेकिन थिंक इसकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, दोज आर द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट हियर. एंड एज अ होल इन पॉइंट से लाइक वी हैव कवर्ड द होल पैराग्राफ. नथिंग लाइक दैट कि हमने कोई पैराग्राफ कवर नहीं किया, बट दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट कि जैसे 40 years of age, you can just even like maybe underline this अगर आपके पास हार्ड कॉपी है इसका, या फिर maybe you can note it somewhere, because Paget's disease dash करके 40 years, osteoclasis more than osteoblastic activity, bone becoming soft but later on becomes dense and harder, like that much is sufficient in case of Paget's disease. इसके अलावा पूरा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3-4 पॉइंट सफिशिएंट है फॉर एग्जाम, है ना. ओके, कमिंग अप टू ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस. ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस मींस कॉन्ड्राइटिस अगर हम पढ़ रहे हैं, कॉन्ड्राइटिस मींस समथिंग हैज टू डू विद द कार्टिलेजिनस प्लेट, है ना. तो ग्रुप ऑफ मिसलेनियस अफेक्शन ऑफ द ग्रोथ एपिफाइसिस, है ना. Children may we see mostly the epiphyseal plate, if that is getting affected, so that is called as osteochondritis. And as a whole, epiphyseal, not only the epiphyseal plate but also the epiphysis means like this whole part, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा पार्ट है एक बोन का, which is articulating with another bone, that is called as epiphysis, है ना. So we can see this कि this particular part that is called as the epiphysis, then this comes the metaphysis and the diaphysis. तो पूरा का पूरा epiphysis along with the epiphyseal plate, that is called as, like, this whole structure is getting affected in this case. So you can say osteochondritis is an umbrella term for the conditions happening in or around
द एपिफाइसिस, ठीक है। तो एपिफाइसिस के आसपास में जो भी कंडीशंस हो रही है, दैट ऑल कम्स अंडर ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। नाउ वी कैन से देयर इज दिस कंडीशन जो हमने पहले भी पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज पर्थिस डिजीज, और इसका इसका पूरा नाम अगर हम देखते दैट इज लेग कैल्व पर्थिस डिजीज ना, LEGGCALVE, देन पर्थिस डिजीज, हाँ, दिस वन ना, this is the whole name of the condition, that is leg calf perthes disease, ठीक है। तो here we can see again the condition is happening with the epiphyseal region of the femur. How? तो perthes disease में होता क्या है कि हमारा जो blood supply है to the head of femur that gets affected, and because of that head of femur का जो वो इंटैक्ट नहीं रह पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स डिफॉर्म्ड, है ना। इसका जो नॉर्मल शेप एंड कंटूर है हेड ऑफ फीमर का, दैट बिकम्स अफेक्टेड, and the bone like gets affected, that is called as Perthes disease. So Perthes disease happening on the epiphyseal region, so we can say it is a part, or it is a type of, or you can say commonest type of osteochondritis of the femur, है ना। फीमर का osteochondritis की अगर हम बात करें, that can be called as Perthes disease. तो osteochondritis is the major like umbrella condition जिसके अंदर बहुत सारी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो osteochondritis is the condition that is happening in or around the epiphysis, that is the osteochondritis. Okay, कमिंग अप टू द कॉक्सा वेरा। ओके, यहाँ पे भी हम कॉक्सा वेरा की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉक्सा वेरा हैज टू डू विद सम काइंड ऑफ फ्रैक्चर। बायोमैकेनिक्स में जब हम कॉक्सा वेल्का कॉक्सा वेरा की हम बात कर रहे थे, दैट वाज सम काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन इन द बोन में कोई ना कोई डिफॉर्मेशन हम देख रहे थे, एंड मे बी बिकॉज ऑफ फोर्स, मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉक्सा वेरा की बात करना चाह रहे हैं ऑर्थो में, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे इट हैज़ टू डू विद समथिंग विद द फ्रैक्चर। So if there is a fracture through the neck of femur, most commonly we see that the bone that the femur goes into coxa vara. Coxa vara means the angle of inclination. Is it increasing or decreasing? What do you think? Decreases. It decreases. So here we can see it has to be something 120 something, and यहाँ पे almost it has come to 90 degrees, है ना, 90 degree आ गया because of the fracture through the neck of femur. So just remember that if there is a fracture through the neck of femur, most commonly it goes into coxa vara. Coxa vara means a decrease in the neck shaft angle or the angle of inclination, and because of that, most commonly we see that this bony fragment that is seen in case of fracture to the neck of femur, that is called as Fairbanks triangle. The Fairbanks triangle is just a small fragment of the fractured bone which is mainly present in the metaphyseal region, जो कि metaphysis से आता है, and that is seen mainly in case of fracture in the neck of femur. And then we see that there is coxa vara that is happening. Coxa vara हम इसलिए बोल रहे हैं because angle of inclination decreases, that's why we are calling it as coxa vara, ठीक है। Okay, but that is it has to do with the fracture, not with any other kind of deformation जो कि हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ रहे थे। बायोमैकेनिक्स में हम फ्रैक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे ना, वहाँ पे तो हम डिफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे बुक में, लेकिन here we can talk about deformation but because of fracture, है ना। Okay, surgical treatment can be subtrochanteric corrective osteotomy. Okay, coming up to next condition, that is तो ये छोटी छोटी conditions है, इसको एक के बाद एक हम ऐसे कवर करते जा रहे हैं, लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है, लेकिन एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, सो इट बिकम्स इजी। सर्वाइकल रिब, तो सर्वाइकल रिब मीन्स कि ऑफ कोर्स वी नो दैट फर्स्ट रिब इट अराइजेस फ्रॉम T1, है ना, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से हमारा फर्स्ट रिब अराइज हो रहा है, लेकिन समटाइम्स इट माइट हैपन दैट फ्रॉम इवन द C7 वर्टिब्रा, C7 से भी अगर रिब अराइज करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल रिब, दैट इज अगेन एन एबनॉर्मल कंडीशन। तो हियर वी कैन सी दिस कि दिस वॉज सपोज टू बी द फर्स्ट रिब जो कि फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से आना था, लेकिन यहाँ पे इवन C7 से भी रिब आ गया है, दिस एंड दिस अराइज हो गया रिब, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल रिब। एंड इवन वर्स इफ इट इज बाइलैटरल, अगर बाइलैटरल है तो इवन और वर्स है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, बाइलैटरल भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल रिब। एंड अब अगर सर्वाइकल रिब अगर प्रेजेंट है, तो इन दैट केस यू कैन टॉक अबाउट ऑल द पॉसिबल कंडीशंस व्हिच कैन हैपन बिकॉज ऑफ any kind of impingement or any kind of decrease in the space in the region, na? So neurovascular structures getting affected and all that, so we can talk about that. So okay, so it can be, first of all, it can be unilateral or bilateral, and it's more common on the right side, more commonly like ज़्यादा prevalence right side पे देखने को मिलता है। The symptoms can be either like it can be neurological, जैसे मैंने अभी बताया कि nerves getting impinged,
इट कैन बी वेस्कुलर, है ना, ब्लड वेसल्स गेटिंग अफेक्टेड, एंड इसके अलावा इट कैन बी लोकल सिम्टम्स. लोकल सिम्टम्स मीन्स की देर कैन बी टेंडरनेस, देर कैन बी दी सॉफ्ट टिश्यूज गेटिंग अफेक्टेड एंड ऑल दैट. पेनफुल होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज दैट विल कम अंडर local symptoms. So neurological symptoms, majorly we can see this tingling sensation and numbness mainly. The brachial plexus might be getting affected, or we can say along the T1 dermatome can be seen. So it means that mostly you can say the brachial plexus might be getting affected, or the lower part of the brachial plexus might get affected. Vascular symptoms, mostly we can say the subclavian artery gets affected, or even we can talk about other arteries or veins as well, which might go into compression. The vascular symptoms, but mostly the subclavian artery. And the local symptoms can be the tenderness, supraclavicular lump on the anterior end of the cervical rib. So some kind of lump can be seen in the particular region, or palpation pit can be highly painful. These are the local symptoms. So, and that comes under cervical rib. Can be unilateral, can be bilateral, and can अगर unilateral है तो right side more prevalent than the left side. ठीक है. Okay, coming up to amputation. तो amputation की हमने बात करी. We know that if we are supposed to cut a particular part of the limb or upper or lower limb, that is called as amputation. And अगर joint के through अगर हम cut करते हैं, that is called as disarticulation. We use the term disarticulation. अब इसमें there can be two different types of amputations. Um, either there can be open amputation or closed. तो close means कि एम्पुटेशन किया, वी जस्ट कट द पार्ट जो कि रिक्वायर्ड नहीं था, या रिक्वायर्ड नहीं मतलब जो कि अफेक्टेड हो गया था, एंड वी जस्ट कट इट एंड देन वी क्लोज द फ्लैप, है ना. बाकी जो हमारे पास स्टम्प पार्ट बचता है, स्टम्प के ऊपर जो स्किन एरिया होता है, वी जस्ट क्लोज इट, है ना, उसको क्लोज कर दिया, सूचर कर दिया, एंड दैट क्लोजेस. लेकिन इन द केसेस जहाँ पे एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यूज एंड आर्टरीज एंड वेन्स अगर अफेक्टेड है, या फिर लेट्स से इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सेप्सिस, एनी काइंड ऑफ pathogen which is affecting the part of the stump, तो in that case we are not supposed to close it straight away ना. जैसे हमने पहले भी देखा था, कोई भी अगर sepsis फॉर्म में कोई पैथोजन प्रेजेंट है, कोई पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो in that case we are not supposed to close it straight away. तो उसको हम ओपन रखते हैं, एंड वी लेट इट क्लोज ऑन इट्स ओन, जिसका हमने वहाँ पे नाम देखा था क्लोजर बाय सेकेंडरी इंटेंशन, है ना. एक तो था क्लोजर बाय प्राइमरी इंटेंशन और प्राइमरी क्लोजर, जहाँ पे डायरेक्टली वी आर जस्ट सूचरिंग इट. लेकिन द सेकंड वन इज क्लोजर बाय सेकेंडरी इंटेंशन, जहाँ पे वी जस्ट लीव इट ऑन इट्स ओन, ऑफ कोर्स इन एन एसेप्टिक कंडीशन, जहाँ पे उसको जितना जितना एसेप्टिक कंडीशन में रखा जाए उतना अच्छा है, ताकि इन्फेक्शन और बढ़े ना, एंड वी जस्ट लेट इट क्लोज ऑन इट्स ओन. दैट इज कॉल्ड एज द ओपन एम्पुटेशन, और यू कैन कॉल इट एज guillotine amputation as well. Guillotine amputation or open amputation. ठीक है. In case of condition which is where the wound is not healthy, or you can say all these possible conditions जहाँ पे कोई pathogen है, कोई pus formation and all that. Okay. Indications we know that it can happen. It can be done in case of any kind of tumor, कोई gangrene form हो गया है, या फिर कोई injury है, any condition which might affect the proximal part of the limb as well. That is called like in those conditions we can go for amputation. Okay. Complications can be all these infection and skin flap necrosis. ये सब तो हमें पता है. There is this condition that is called as phantom sensation. कोई बताएगा मेरे को? Phantom sensation और phantom limb pain भी इसको हम बोलते हैं ना. सुना है ना? Yes sir. Okay, बताओगे? सर बेसिकली कि जो लिम नहीं है, मतलब जिस लिम का एम्पुटेशन हो चुका है, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो अभी भी है, और उसकी वजह से उसे पेन और उसकी सेंसेशन फील होती है. हाँ एग्जैक्टली, मतलब बोल रहे हो कुछ आप? हाँ मतलब सिर्फ वही फैंटम लिम पेन भी बोलते हैं ना. हाँ, फैंटम लिम पेन बोलते हैं इसको, या फैंटम सेंसेशन. किसी को पता है फैंटम एक सुपर हीरो था, मतलब बहुत पहले के टाइम पे, किसी ने सुना है? ये फैंटम टर्म मेरे ख्याल से वहाँ से आया. फैंटम मतलब एक, जैसे आजकल के जो सुपर हीरोज रहते हैं ना, मेरे पुराने कॉमिक्स में एक सुपर हीरो था, दैट वाज फैंटम. आई थिंक इंडिया में इतना शायद फेमस भी नहीं था, शायद यूएस वगैरह में. आई थिंक अभी से आई थिंक 50-55 ईयर्स कुछ पहले के टाइम की बात है. ये सब आपने नाम सुना होगा, आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका एंड ये सब. तो ये सब मार्वल के जो रहते हैं, उसमें एक फैंटम भी था. तो आई थिंक शायद वहाँ से फैंटम बेसिकली मीन्स जो कि प्रेजेंट नहीं है एंड फिर भी दिख रहा है वहाँ पे. तो फैंटम लिम्ब पेन, तो फैंटम लिम्ब पेन इट इज़ मेजरली हैपनिंग बिकॉज
हमारे ब्रेन में हम एक एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज होमनकुलस, होमनकुलस ऑफ द बॉडी, या फिर हम कहते हैं कि एक बॉडी का एक मैप बना होता है ब्रेन के अंदर, नॉट फिजिकली बट एक मैपिंग, और एक कैन से जो न्यूरोनल जो कंडीशनिंग इस तरह से होती है, इट इज़ लाइक कि हमारे बॉडी का अलग अलग सेंसेशन की, अलग अलग पार्ट की सेंसेशन कितनी, किस में कितनी ज़्यादा होगी, किसकी कितनी कम होगी, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे ब्रेन में मतलब एक मैपिंग बनी होती है। तो आप भी देखोगे कि ज़्यादा सेंसेशंस आपको देखने को मिलेगी अगर हम टंग की बात करते हैं, या फिर अगर हम फेस की बात करते हैं। फेस पे अगर अगर हल्का सा भी एक स्ट्रोक करता है कोई, तो बहुत जल्दी सेंसेशन देखने को मिलती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम टोज़ की, फीट की बात करें या लेग की अगर बात करें, तो वहाँ पे सेंसेशन इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, जितनी सेंसेशन हमारी फेस पे या फिर टंग पे प्रेजेंट है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि जो फेस, हेड एंड ये सब जो रीजन है, इसको इसको मेजरली ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारे ब्रेन में, मतलब सेंसेशन के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम फीट की या फिर लेग की अगर हम बात करते हैं, तो इन दैट केस उसके लिए इतनी सेंसेशन, इतने इतना इतना इट इज़ नॉट कवरिंग दैट मच एरिया ऑफ द ब्रेन। तो दैट्स वाई वी से कि मतलब कोई कोई मतलब इवन जैसे विंटर्स के टाइम पे अगर अगर वी कैन सी दिस कि इफ द पर्सन इज वेयरिंग लेट्स से शॉर्ट्स, अगर पर्सन ने पहना हुआ है, स्टिल द पर्सन कैन बेयर इट, लेकिन फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब हमें ठंड फील होती है एंड वो से, तो फेस को हम कवर कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ। फीट कैन स्टिल बी लाइक इट इज स्टिल बियरेबल। अगर हम लेग्स की बात करते हैं, लेग्स में स्पेसिफिकली, तो इट मीन्स कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइक ब्रेन, मतलब एरिया जो कि कवर कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अब अगर अगर लेट्स से अगर हमने आर्म को कट कर रिमूव कर दिया, लेकिन उसके लिए जो न्यूरोनल कंडीशन जो है, न्यूरोनल सिग्नल्स जो है, वो तो ब्रेन में अभी भी प्रेजेंट है। तो ब्रेन कंटिन्यूसली कीप ऑन गिविंग दिस सेंसेशन कि वहाँ पे अभी भी वो बॉडी पार्ट प्रेजेंट है एंड अभी भी वहाँ पे पेन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो प्रेजेंट नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू गो फॉर मिरर थेरेपी, जहाँ पे पर्सन के सामने मिरर रखा जा रहा है, एंड वेयर द पर्सन इज रियलाइज कि एक्चुअल में अभी उसके पास लिम्ब प्रेजेंट नहीं है, ताकि पर्सन को एक फीडबैक मिले, विजुअल फीडबैक, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ द पर्सन कैन रियलाइज कि हाँ, मतलब लिम्ब प्रेजेंट नहीं है तो पेन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। दैट इज कॉल्ड एज मिरर थेरेपी, है ना। तो दैट कैन बी परफॉर्म, दैट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन केस ऑफ एम्पुटेशन एंड ऑल। ठीक है, तो नाउ कमिंग अप टू दिस थिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने एक बार ये टर्म्स यूज़ करे थे, लेकिन इसको हम एक बार प्रॉपरली देख लेते हैं। हाँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज द टर्म फोर क्वार्टर एंड हाइंड क्वार्टर। ये मैंने पहले बताया था कि फोर लिम्ब मीन्स अपर लिम्स, है ना, एंड हाइंड लिम्ब मीन्स लोअर लिम्स। तो फोर फोर क्वार्टर मीन्स कि फोर लिम्स में, अपर लिम्ब में अगर अगर एम्पुटेशन हो रहा है, एंड हाइंड क्वार्टर मीन्स अगर लोअर लिम्ब में इफ देयर इज एम्पुटेशन दैट इज हैपनिंग। तो फोर क्वार्टर या हाइंड क्वार्टर टर्म अगर यूज होता है, इट मीन्स कि पूरा का पूरा लिम्ब को हमने रिमूव कर दिया अलॉन्ग विथ सम ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कर रहे थे, लाइक द क्लैविकल, द स्कैपुला एंड ऑल दैट। तो वी कैन सी कि अगर फोर क्वार्टर एम्पुटेशन की अगर हम बात करें, दैट इज लाइक द होल अपर लिम्ब इज रिमूव्ड अलॉन्ग विद दैट scapula, along with that lateral two-third of the clavicle as well, that is also removed. So some part of scapula, the clavicle, and along with that the whole of the arm is removed. That is called as forequarter. Likewise, hind quarter mein we can see the whole lower limb is removed. Along with that, some part of the innominate bone, one side of the ilium is also removed. That is called as हाइंड क्वार्टर एम्पुटेशन। तो पूरे के पूरे लिम्ब को हम रिमूव कर रहे हैं, और उसके साथ में जो थोड़ा सा बोन जो कि हमारा उसको कनेक्ट कर रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से, उसको भी रिमूव किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज फोर क्वार्टर और हाइंड क्वार्टर। लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, जॉइंट से हो रहा है, जॉइंट से एम्पुटेशन हो, दैट इज कॉल्ड एज शोल्डर जॉइंट शोल्डर एम्पुटेशन। लाइकवाइज हिप सॉरी शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, लाइकवाइज हिप डिसआर्टिकुलेशन। ऐसे ही हमारा एल्बो डिसआर्टिकुलेशन हो सकता है, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन हो सकता है। वैसे ही लोअर लिम्ब में देयर कैन बी नी डिसआर्टिकुलेशन और एंकल डिसआर्टिकुलेशन। इसके साथ में इफ देर इज दिस हाँ, या तो अबव अबव एल्बो, अपर लिम्ब में देयर कैन बी अबव एल्बो, ठीक है, और देयर कैन बी बिलो एल्बो, है ना। अगर अगर बिलो एल्बो है तो बिलो एल्बो एम्पुटेशन, अबव एल्बो एम्पुटेशन, और देयर कैन बी एल्बो एम्पुटेशन। लाइकवाइज लोअर लिम्ब में देयर कैन बी नी डिसआर्टिकुलेशन, एल्बो डिसआर्टिकुलेशन की तरह नी डिसआर्टिकुलेशन, और अबव नी एम्पुटेशन, लोअर नी एम्पुटेशन। तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि ये एम्पुटेशन कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। हाइंड क्वार्टर एंड फोर क्वार्टर एक बार याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
एंड इसके अलावा देर आर सर्टेन टिपिकल टर्म्स विच आर गिवन, जैसे एक होता है दैट इज कॉल्ड एज रे एम्पुटेशन. रे एम्पुटेशन सिंपली मीन्स जहाँ पे हम फिंगर को एम्पुटेट कर रहे हैं, तो दैट इज द रिमूवल ऑफ अ फिंगर with respective मेटाकार्पल फ्रॉम द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, है ना. तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के बीच में जहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉइंट पे वी आर कटिंग इट एंड वी आर जस्ट रिमूविंग दैट पर्टिकुलर फिंगर, दैट इज कॉल्ड एज रे एम्पुटेशन. नाम ध्यान रखना, रे एम्पुटेशन. लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट क्रूकनबर्ग्स एम्पुटेशन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. क्रूकनबर्ग्स एम्पुटेशन मीन्स कि हमने हमने एम्पुटेशन किया एंड उसके बाद में व्हाट वी डिड दैट वी कट द फोर आर्म इनटू अ सर्टेन शेप जहाँ पे वो फोरसेप शेप में देखने को मिल रहा है. आई थिंक मैंने पहले डिस्कस किया है कि नहीं, किया है कि नहीं किया, No. नहीं किया. ओके, क्या हुआ, हाँ ओके. एक सेकेंड एक सेकेंड. Krukenberg amputation. Okay, so this is seen in case of Krukenberg amputation. हाँ, देखो, the forearm is cut, or you can say it is cut at the level of arm or at the level of hand, and then we see that we just cut it in a certain shape कि इसको forceps shape में बनाया जाता है ताकि so that even like a person can use it to certain extent. तो forceps like इसको maybe to lift something, है ना, एक ग्रॉस मूवमेंट के लिए. ऑफ कोर्स प्रिसाइज मूवमेंट तो नहीं कर पाएगा पर्सन, जैसे फिंगर से एंड हैंड से किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट ग्रॉस एक्शंस कर सकता है पर्सन, थोड़ा बहुत वाटर बॉटल उठा लिया, बुक उठा लिया, वो सब. तो दैट इज कॉल्ड एज क्रूकनबर्ग एम्पुटेशन. दिस इज इंटरेस्टिंग. दैट इज क्रूकनबर्ग एम्पुटेशन. ठीक है, हियर वी कैन सी दिस थिंग, है ना, इस तरह से कुछ किया जा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज क्रूकनबर्ग एम्पुटेशन. देखो दिस वन, the person is able to easily eat and drink water by this forceps shaped forearm, that is called as Krukenberg amputation. ठीक है, ओके. क्रूकनबर्ग एम्पुटेशन, रे एम्पुटेशन, ये इंपॉर्टेंट था. इसके अलावा अगर लोअर लिम्ब पे आते हैं, लोअर लिम्ब पे बाकी सब सेम है, लेकिन इसके अलावा दो एम्पुटेशन है. वन इज द साइम्स एम्पुटेशन, शोपार्ट एम्पुटेशन एंड लिस्ट फ्रैंक्स. तो ये तो नाम के अकॉर्डिंग हमें समझ आ रहा है, लेकिन साइम्स एम्पुटेशन क्या है? साइम्स एम्पुटेशन मीन्स कि एट द लेवल ऑफ टैलोक्रूरल जॉइंट, अगर हम टैलोक्रूरल जॉइंट पे अगर हम कट कर देते हैं, और द एंकल जॉइंट जहाँ पे हमारा आर्टिकुलेशन हो रहा है, द डिस्टल टीबिया, डिस्टल फिबुला एंड प्रॉक्सिमल talus, अगर उस joint पे if we go for the amputation, that is called as Symes amputation. Chopard's amputation, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा गलत इन द सेंस कि मतलब we can see this कि Chopard amputation जो है, Chopard amputation is done at the level of Chopard joint or the intertarsal joint, है ना, और mid tarsal joint जहाँ जिसके हमने बात कर रहे थे Chopard joint, वहाँ पे if we are going for the amputation, तो ये भी let me show you. Chopard amputation. Okay. Um, just a second. हाँ, this thing. Uh, okay, यहाँ पे देख लेते हैं. This one, जहाँ पे the amputation is given through the Chopard joint, whole of the Chopard joint. That is called as Chopard amputation, and we can see that the distal part of the foot is removed. That is called as Chopard amputation. And likewise, we can talk about Lisfranc's amputation. Lisfranc's amputation में it is being cut at the level of tarso-metatarsal joint, because Lisfranc's joint जो होता है, लिस्ट फ्रैंक्स जॉइंट जो है, दैट इज द टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट. तो अगर टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट पे अगर एम्पुटेशन दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द लिस्ट फ्रैंक्स एम्पुटेशन. एंड शोपार्ट एम्पुटेशन मींस कि एट द लेवल ऑफ शोपार्ट जॉइंट अगर एम्पुटेशन दिया जा रहा है. ठीक है, एंड लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट द एम्पुटेशंस. लेकिन साइम्स एम्पुटेशन से हमें समझ नहीं आ रहा वो क्या है. तो साइम्स एम्पुटेशन एट द लेवल ऑफ एंकल, ऐसी रे एम्पुटेशन ऑफ द फिंगर, एंड क्रूकनबर्ग्स एम्पुटेशन जहाँ पे फोरसेप्स शेप में फोरआर्म को कट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रूकनबर्ग्स एम्पुटेशन. ठीक है, दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट. इसके अलावा फोर क्वार्टर, हाइंड क्वार्टर यू नो, एंड द रेस्ट ऑफ द एम्पुटेशन यू कैन इजीली फिगर आउट उनके नाम के अकॉर्डिंग. अबव एल्बो, अबव नी, ठीक है, इस तरह से. ओके, कमिंग अप टू द प्रोस्थेसिस. प्रोस्थेसिस की अगर हम बात करें, प्रोस्थेसिस का लिटरल मतलब ये होता है जो कि एक नकली चीज़ है, मतलब समथिंग विच इज़ नॉट रियल, है ना. तो ऐसे हम टर्म यूज़ करते हैं ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेसिस. तो ऑर्थोटिक डिवाइस जो होता है, दैट मीन्स कि समथिंग जो कि बाहर से सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट है हमारे पास में, जो कि हम फिजिकली नहीं कर पा रहे वो चीज़, एंड कुछ चीज़ एक्सटर्नली
सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोटिक डिवाइस, है ना. एंड प्रोस्थेसिस मीन्स कि जो कि एक हमारे रियल स्ट्रक्चर बॉडी का जो था उसको रिमूव करके एक नकली स्ट्रक्चर को हमने अप्लाई कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेसिस. डेंटल में भी एक वो होता है ना, डेंटल स्पेशलाइजेशन उसको कहते हैं प्रोस्थोडोंटिक्स, है ना. तो वहाँ पे भी दे टॉक अबाउट प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, जो नकली डिवाइस होता है जो कि दैट कैन बी यूज्ड इन द डेंटल स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, है ना. तो उसमें दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थोडोंटिक्स. तो वैसे ही प्रोस्थेसिस, तो प्रोस्थेसिस कैन बी एक्सटर्नल इन यूज, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आर्म हो गया, या लोअर लिम के लिए प्रोस्थेटिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं. और इट कैन बी यूज इंटरनली एज वेल, जैसे इन केस ऑफ THR, इन केस ऑफ TKR, जहाँ पे a particular part of the bone is cut and removed, and उसकी जगह पे हम एक आर्टिफिशियल डिवाइस अप्लाई करें, जैसे जैसे हमने बात करी थी अबाउट Austin Murray prosthesis, है ना. Austin Murray prosthesis, we talked about that, है ना. That is present, that is like can be used in place of the head of femur. Austin Murray prosthesis. वैसे ही अभी हम आगे prosthesis की बात करेंगे यहाँ पे. This one, these are the prosthesis that can be used in case of total knee replacement. ठीक है. तो these are again, the prosthesis can be either external in use or can be internal in use. ठीक है. ओके. तो मेजरली अगर एक्सटर्नल यूज में अगर हम बोल रहे तो इट कैन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरली इट कैन बी फॉर फंक्शनल यूज, है ना. अगर पर्सन फंक्शनल यूज करना चाहता है, पर्सन कांट वॉक, पर्सन कांट मे बी यूज द हैंड्स एंड ऑल दैट टू लिफ्ट समथिंग, तो इन दैट केस वी कैन यूज फॉर अ प्रोस्थेटिक डिवाइस एंड वी कैन यूज इट, एंड द पर्सन बाय द यूज ऑफ दैट प्रोस्थेसिस द पर्सन कैन कैरी आउट सर्टन फंक्शन, सर्टन एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक डिवाइस. अभी के टाइम पे तो ये तो पहले के टाइम पे इट यूज टू बी, it used to be wooden, then it became metallic in nature, and उसके बाद में अब तो ये रोबोटिक आ रहा है. तो रोबोटिक आर्म अगर आपने देखा हो, मतलब मैं वीडियो सेंड कर दूंगा यूट्यूब, इस पे यूट्यूब की वीडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप में. तो उसमें देर आर दीज रोबोटिक डिवाइसेस, रोबोटिक आर्म, रोबोटिक लेग होता है, जो कि लाइक इट इज़ प्रोग्राम्ड इन सच अ वे दैट यू कैन यूज इट टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़. तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. इसके अलावा ना एक मेरे माइंड में आ रहा है, एक टेड टॉक था, मतलब मैंने एक टेड टॉक देखा था, आई थिंक कुछ टाइम पहले देखा था. तो इट वाज लाइक कि जैसे जैसे हम नॉर्मली वी यूज द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर ना, जैसे एक लेट्स से पर्सन इज पैरालाइज, द पर्सन कांट कर्ल देयर फिंगर, लेट्स से, ना एग्जांपल अगर हम लेके चल रहे हैं. तो इन दैट केस what he did ki like rather than connecting the muscles of the person with some electrical stimulator, he just connected it with his fingers. मतलब ऐसा किया कि जैसे let's say एक पेशेंट है, पेशेंट के हैंड पे लगे, एक पेशेंट है, वो अपने फिंगर्स को कर्ल नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डेफिसिट इन द मसल, या फिर मे बी कोई नर्व सप्लाई उस मसल के अफेक्टेड है. एंड उस वायर को मैंने एक डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है, उसके थ्रू वो दूसरा मतलब मेरे हैंड से कनेक्ट है. एंड अब जब मैं फिंगर कर्ल कर रहा हूँ तो उस पर्सन की भी फिंगर कर्ल हो रही है. एंड दैट इज़ सच अ ग्रेट डिवाइस, लाइक आई डोंट नो मतलब वो कहाँ अवेलेबल है क्या, बट मैं वो वीडियो डेफिनेटली आई विल सेंड इट इन द ग्रुप. तो उसमें व्हेन द थेरेपिस्ट इज डूइंग like the performing the activity, same टाइम पे द पेशेंट इज ऑल्सो एबल टू परफॉर्म इट, है ना. तो पेशेंट की भी फिंगर कर्ल हो रही है. तो उसे दो दो फीडबैक मिल रहा है. एक तो उसको सेंसरी फीडबैक, मतलब विजुअल फीडबैक मिल रहा है उसको, जहाँ पे द पर्सन इज एबल टू, मतलब जो दूसरा पर्सन है वो एक्टिविटी कर रहा है. उसके साथ में जो पेशेंट है, पेशेंट खुद से भी ट्राई करेगा वो एक्टिविटी करने का, एंड साथ में जितना है जो उतना असिस्ट भी कर पा रहा है वो मशीन, है ना. तो लाइक दैट इज सच अ ग्रेट this machine that can be used for the rehabilitation part. तो मैं उसकी 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 वीडियो मैं डेफिनेटली अभी सेंड करता हूँ. एंड ठीक है. तो दैट कैन बी, मतलब वो तो मैं वहाँ पे आगे वो मेरे माइंड में है, लेकिन यहाँ पे अभी हम प्रोस्थेसिस की बात कर रहे थे. तो प्रोस्थेसिस कैन बी मोटराइज्ड एज वेल. ओके. so likewise we can see some of the examples, like above knee amputation के case में we can go for the quadrilateral socket prosthesis, और in case of Symes amputation जहाँ पे finger remove किया जाता है तो वहाँ पे Canadian Symes prosthesis can be used, or patellar tendon bearing prosthesis in case of below knee amputation, or partial like these shoe fillers can be used so that the person is easily able to use the shoe, wear the shoe, that is called as shoe filler. In case of any kind of foot amputation, show part amputation या लिस्ट फ्रैंक्स amputation के केस में, ना. तो that is the prosthesis. Likewise we can talk about the orthotic devices as well. तो orthosis में we can talk about this
four pillar orthotic device. Or we can talk about this whole of the device that is called as HKAFO, that is the that is the hip, knee, ankle, foot orthosis. और likewise depending upon the amount of severity, मतलब एक person अगर let's say still the person is able to bear some amount of weight, so in that case we might go for the orthotic device जो कि सिर्फ knee से start हो रहा है, that is called as knee ankle foot orthosis. Or if the person needs complete support, that is the hip knee ankle foot orthosis, है ना. तो hip knee ankle foot orthosis का एक example हम बोल सकते हैं, that can be caliper. तो caliper is used in case of poliomyelitis में majorly lower limb gets affected ना. किसी को ध्यान में, poliomyelitis is a lower motor neuron lesion और upper motor neuron lesion? What do you think? इट इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन. ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है जहाँ पे मेजरली जो मसल्स एंड ऑल दैट दोज आर गोइंग इनटू फ्लैसिडिटी, नॉट इनटू स्पासिटी. ये सब हम पढ़ेंगे कि न्यूरो में कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है ना, आपको पता भी होगा मेजरली. एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है, एंड इसके अलावा फ्लैसिडिटी एंड स्पासिसिटी का रीज़न क्या होता है, क्यों देखने को मिलता है हमें फ्लैसिडिटी. तो इन दैट केस पोलियो में the person uses a caliper, so like as a support, that is again an orthotic device that can be used. Okay, so it can be used to immobilize, to prevent any kind of deformity, to correct the deformity. ये थोड़ा सा छुप गया यहाँ पे because of this image. मैं इसको ये उसमें ठीक होगा जो आपके पास PDF है. For assisted movements and to relieve some amount of weight and to provide support for all these things, the orthotic device, any kind of external support that is it can be used, that is called as an orthotic device. ठीक है. Okay, coming up to this important surgical procedure that is called as the arthroscopic surgery. So it is the latest surgery, and these days arthroscopic surgery ही majorly follow की जा रही है in a lot of conditions, ranging from ligament injury to meniscal injury, even to some kind of capsular, मतलब joint capsule injury में अगर है कोई muscle tendon कोई effect अगर हो गया यहाँ पे, या फिर even some kind of bone fracture as well. तो इन दोज केसेस ऑल्सो वी कैन गो फॉर द आर्थोस्कोपिक सर्जरी. अब आर्थोस्कोपिक सर्जरी है क्या? आर्थोस्कोपिक सर्जरी सीज दैट विथ मिनिमल अमाउंट ऑफ इन्वेजन, बहुत कम अमाउंट का इन्वेजन हमें करने की जरूरत है, बहुत कम स्मॉल कट से भी वी कैन गो फॉर लार्ज a lot of different procedures, and a lot of different procedures can be performed here. तो that is called as arthroscopic surgery. तो इसमें majorly what they are doing, that एक there is a 4 mm का diameter एक structure का होता है, that is called as an arthroscope, or we can see this one, this instrument, this is called as an arthroscope. इसको हम arthroscope कहते हैं. इसका जो एंड मोस्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो दैट इज अ बिट ऑब्लिक इन शेप, और थोड़ा सा ऑब्लिक होता है. अब ऑब्लिक है तो यहाँ पे देयर इज अ कैमरा दैट इज प्रेजेंट, एंड दिस इज इंसर्टेड, मतलब एक होल बनाया जाता है, उस होल के थ्रू दिस आर्थ्रोस्कोप इज इंसर्टेड, एंड उसके बाद में वी गेट टू सी द इनर स्ट्रक्चर्स, है ना, वो हमें देखने को मिलेगा अंदर का. एंड उसके बाद में वी कैन फिगर आउट कि अंदर कौन सा स्ट्रक्चर अफेक्टेड है, क्या चीज़ हमें देखने को मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोस्कोपिक, दैट इज कॉल्ड एज दिस डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी, है ना, दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी, जहाँ पे हम सिर्फ डायग्नोज कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ एन आर्थ्रोस्कोप, एंड वी आर इंसर्टिंग इट, एंड वी आर जस्ट हैविंग अ लुक एट द इनर पार्ट कि अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है. दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी. So it is 4 mm in diameter, this one, and the last most part end most part is at an obliquity of almost 30 degrees. 30 डिग्री का obliquity होता है, ठीक है, यहाँ पे this thing, this end most part is oblique, and that is called as arthroscope. And इसके बाद में there is another hole that is made, दूसरे hole के through there is another instrument that is inserted, and then we can use that for the arthroscopic surgery, where we are using it for the therapeutic process, जहाँ पे हम उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं ना. तो then we can use that hole to insert the tool, and then we can use it uh, to construct maybe the ACL or maybe जो meniscus है, जो भी स्ट्रक्चर अगर अफेक्ट वहाँ पे हुआ है, तो फॉर दैट, एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्थोस्कोपिक सर्जरी. तो इसके फायदे बहुत सारे हैं, एडवांटेजेस बहुत सारे, दैट बहुत कम मतलब barely any scar that is visible after some time of the surgery, and very minimal amount of invasion करा जा रहा है. यहाँ पे डे केयर सर्जरी है, सुबह के टाइम पे पर्सन एडमिट हुआ एंड शाम तक the person is fine, we can just discharge the person, शाम तक person discharge हो जाता है. And very like
तो all these advantages can be there. लेकिन इसके अलावा डिसएडवांटेज ये चीज़ है कि ऑफ कोर्स वी हैव गॉट अ स्मॉल एरिया, बहुत कम एरिया हमारे पास है, तो बहुत कम एरिया है तो हमें उतने एरिया में ही काम करना है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट. So that is the major disadvantages of this procedure, that only a small area can be used for the procedure. But उसके अलावा there can be a lot of these advantages of using the arthroscopic surgery. ठीक है. Okay. Talking about the instruments, तो एक हमने आर्थ्रोस्कोप के बारे में बात कर लिया. आर्थ्रोस्कोप इज द it can be used for diagnostic arthroscopy, and यहाँ पे इसके बाद there is a camera that is present. इसके अलावा there is a light source, a fiber optic cable that can be used, a video camera, TV monitor, जहाँ पे ये सब चीज़ें मतलब देखी जा रही है in a structure that these are all the tools that can be used. इसके अलावा for the basic operations, there can be the cutters, the graspers, the scissors and all that, knives. And इसके अलावा you can like see that to perform complex operations there can be these motorized shavers. तो you will see इसके ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जो होती है ना, that is nothing less than मतलब समथिंग लाइक कि वहाँ पे ग्रॉस आपको मतलब वहाँ पे ब्लेड्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे मतलब ऑल दीज कटर्स एंड ऑल दैट, वहाँ पे बोन को कट किया जाना पड़ता. तो इट इज़ नॉट यू कैन से सोफिस्टिकेटेड, जस्ट लाइक एक न्यूरो सर्जरी की हम बात करते हैं. न्यूरो सर्जरी इज़ लाइक कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत है. एंड यू नो दिस थिंग कि मतलब एक अगर हम न्यूरो सर्जन की बात करते हैं ना, न्यूरो सर्जन का जो प्रैक्टिस पीरियड होता है ना वो बहुत कम होता है, एंड स्टडी पीरियड बहुत ज़्यादा होता है. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि ऑफकोर्स उसको पहले तो बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा सो एज टू बी एबल टू फिगर आउट ईच एंड एवरी नर्व इन द ब्रेन. एंड इसके अलावा उनकी हैंड की स्टेबिलिटी को भी चेक किया जाता है कि हैंड कितना स्टेबल है. हैंड की स्टेबिलिटी अगर बहुत अगर थोड़ा सा भी स्लाइट अमाउंट ऑफ अगर ट्रेमर आना शुरू होता है हैंड में उनके, तो दे बिकम डिसक्वालिफाइड टू परफॉर्म न्यूरो सर्जरी, बिकॉज न्यूरो सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत है, बहुत बारीक काम है. लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज लाइक समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे यू आर यूजिंग दिस ग्रॉस टूल्स एंड ऑल दैट, एंड एक मतलब इतना ज़्यादा प्रिसीजन ना भी हो तब भी काम चलता है वहाँ पे, है ना. दैट इज़ समथिंग लाइक ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो हो रहा है वहाँ पे. ओके. तो दिस इज द आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी. आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जो हमने देख लिया. ओके, नाउ लिमिटेशंस वी कैन सी दैट वी हैव गॉट अ कन्फाइंड स्पेस, बहुत स्मॉल स्पेस हमारे पास प्रेजेंट है. एंड फॉर द मैन्यूवर, फॉर ऑल द एक्टिविटीज, है ना, पूरा मूवमेंट ऑफ द टूल्स, फॉर ऑल दैट फॉर दैट वी कैन सी कन्फाइंड स्पेस वी हैव गॉट. एंड वी कैन टॉक अबाउट दीज. लाइक अगर हम नी की बात करते तो वी कैन से वी हैव गॉट दिस सुपीरियर और द मिड पटिलर और द इंफ्रा पटिलर रीजन, जहाँ पे वी कैन गो फॉर द टू मेक द होल और टू मेक द स्पेस जहाँ से हमारा आर्थ्रोस्कोप या फिर टूल्स जो है वो एंटर कर सकते हैं. तो दिस कैन बी डिफरेंट रीजन्स. लाइकवाइज देयर कैन बी दिस पोस्टीरियर रीजन एज वेल. तो डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट पोर्टल्स, है ना, डिफरेंट होल्स दैट वी कैन मेक, जहाँ से वी कैन एक्सेस the inner structures. That is called that can be done in case of knee. Likewise in case of different joints we can talk about the arthroscopic surgery. तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कहीं पे किसी सर्जरी में बहुत ज़्यादा मैन्यूवर की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को टूल्स को मूव करना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स इन दैट केस वी नीड टू गो फॉर कंप्लीट ओपनिंग ऑफ द रीजन. लेकिन उसके अलावा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड like quite often in other conditions. Okay, that was all with the arthroscopic surgery. Last comes the joint replacement surgery. Joint replacement में we can call it as arthroscopy, ना. नहीं, sorry, arthroplasty, not arthroscopy. Arthroplasty. Arthroplasty can be either hemi-arthroplasty or complete arthroplasty. Complete arthroplasty means complete joint replacement, जहाँ पे हम जिसको हम TKR, THR बोलते हैं, that is complete joint replacement और complete arthroplasty. This is hemi-arthroplasty. तो हेमी आर्थोप्लास्टी मेजरली परफॉर्म्ड इन द केसेस जहाँ पे फ्रैक्चर अगर हुआ है. तो फ्रैक्चर केसेस में वी कैन से कि इफ देयर इज अ फ्रैक्चर थ्रू द नेक ऑफ फीमर, ऑफ कोर्स एसिटाबुलम तो अपना ठीक है, नॉर्मल है. तो इन दैट केस वी कैन जस्ट कट एंड रिमूव द हेड एंड नेक पार्ट ऑफ द फीमर, एंड वी कैन इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन गो फॉर दिस ऑस्टिन मूरे प्रोसेस, है ना, एंड वी कैन अप्लाई दैट इज कॉल्ड एज हेमी आर्थोप्लास्टी. सिर्फ एक ही आर्टिकुलेटिंग एरिया को हम रिमूव या रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेमी आर्थोप्लास्टी. इसके अलावा कंप्लीट आर्थोप्लास्टी मीन्स कि दोनों एरिया, तो इट कैन बी परफॉर्म मेजरली इन द केसेस जहाँ पे दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस अगर लेट्स से मे बी इन केस ऑफ फ्रैक्चर ऑल्सो, फ्रैक्चर में एसिटाबुलम हेड ऑफ फीमर दोनों अगर इफेक्ट हो गए, तो इन दैट केस वी नीड टू गो फॉर टोटल जॉइंट आर्थोप्लास्टी. या मोस्ट कॉमनली दिस इज परफॉर्म्ड इन द केसेस ऑफ
ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जहाँ पे हिप और नी जॉइंट ऑस्टियो आर्थराइटिस हो रहा है, वहाँ पे एसिटाबुलम एंड हेड ऑफ फीमर दोनों दोनों के दोनों वहाँ पे इरोड हो रहे हैं, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर कंप्लीट जॉइंट आर्थरोप्लास्टी और टोटल जॉइंट आर्थरो रिप्लेसमेंट, और वी कैन कॉल इट एज टोटल हिप रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट, और मे बी टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं हम, ठीक है, टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट भी देखने को हमें मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंड in that case it can be either cemented or non cemented. तो cemented one and non cemented, just imagine कि एक ओल्डर इंडिविजुअल है, ओल्डर इंडिविजुअल में अगर हम ये स्क्रूज एंड ऑल अगर हम इंसर्ट करना चाहे, एंड ऑलरेडी द बोन इज रियली वीक है ना, एंड मे बी ओल्डर इंडिविजुअल्स में अगर बोन ऑस्टियोपोरोटिक भी हो सकती है, एंड वहाँ पे अगर हम बोन या स्क्रूज अगर हम इंसर्ट करेंगे बोन में, तो बोन माइट बी, मतलब इट माइट बी फ्रेजाइल एंड इट माइट ब्रेक इवन फर्दर। So that's why we need to go for this cemented type of arthroplasty. So this is mostly performed in the older individuals. Like at the same time, if we talk about the younger individuals, in that case we can go for these fixation screws and all that. So screws can be used in case of younger individuals, and cement is used majorly in the case of older individuals. So this is called as cemented arthroplasty. This is called as non-cemented टाइप ऑफ आर्थोप्लास्टी, एंड दोनों हम मतलब कंप्लीट आर्थोप्लास्टी तब कर रहे हैं जब वी सी दैट बोथ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस आर अफेक्टेड। तो दिस प्रोसीजर वाज डेवलप्ड बाय सर जॉन कार्नले, यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम, एंड सीमेंटेड आर्थोप्लास्टी, दोनों की अगर हम बात करें, दोनों दोनों टाइप की आर्थोप्लास्टी की अगर हम बात करें, इनका जो लाइफ जो रहता है इस प्रोस्थेसिस का, दैट इज ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स, 15 ईयर्स मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं जाता है, एंड 10 to 15 ईयर्स नॉर्मल इसका लाइफ स्पेन रहता है, एंड दैट इज द रीजन वाई एटलीस्ट 50 ईयर्स के बाद में a person is advised to go for complete joint replacement or for arthroplasty as a whole, because 50 के बाद में मे बी द पर्सन needs to go for another round of surgery, मे बी एक बार या मे बी दो बार, और कीपिंग इन माइंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पर्सन। लेकिन अगर अगर काफ़ी कम एज में किया जाता है, तो इन दैट केस रेगुलरली द पर्सन needs to go for this arthroplastic this surgery, and that becomes really difficult for the person. That's why, because 10 to 15 years का इसका अभी लाइफ स्पैन है। So the thing is that we are not able to, till now we are not able to come up with any structure which is anything near or close to the natural structure, मतलब natural जो बोन हो गया, स्किन हो गया, उसके लाइक हम क्लोज तक भी नहीं पहुंच पाए अभी तक कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाए जहाँ पे लाइक इट कैन ग्रो ऑन इट्स ओन, है ना। तो ऐसा कुछ अभी अभी लाइक देर आर these researches going on stem cells। तो stem cells are the cells जो कि खुद से रीजनरेट करते हैं, जैसे लाइक इन द लिवर वी हैव गॉट सम स्टेम सेल्स। तो लिवर में हम कहते हैं ना, अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात करते हैं, कभी भी लिवर पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट नहीं करते, स्मॉल पार्ट ऑफ लिवर इज ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन, एंड ट्रांसप्लांट करने के बाद में लिवर जो है वो खुद ब खुद रीजनरेट करता है वापस पूरा। तो लाइक वाइज वी कैन टॉक अबाउट सम सच काइंड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, सच काइंड ऑफ रीजनरेशन इन अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल। तो उसके ऊपर स्टेम सेल रीजनरेशन के ऊपर देर आर दीज researches which are going on, and maybe we can come up with some structure जो कि फ्यूचर में which can easily मिमिक एग्जैक्टली द सेम जैसे हमारा नेचुरल स्ट्रक्चर होता है। अगर ऐसा हो गया तो इन दैट केस उससे बेटर कुछ नहीं होगा, बिकॉज उससे रिप्लेस कर दिया एंड उसके बाद में द पर्सन इज लाइक अगेन परफेक्टली फाइन। तो उस केस में तो इवन इवन अगर अगर फ्रैक्चर होता है या फिर इवन अगर ऑस्टियो, तो दैट इज लाइक कैन बी कॉल्ड एज लाइक यू कैन से कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे तो फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया ऑस्टियो आर्थराइटिस का या किसी भी कंडीशन का, तो जहाँ पे हमने उसको उस आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया, लेकिन वो भी वापस रीजनरेट कर सकता है, तो उससे तो बेटर कुछ नहीं होगा। बट अगेन एट द सेम टाइम दैट कैन बी इवन इवन डेंजरस एज वेल, बिकॉज इसका मतलब है अब तो फिर वापस पूरा का पूरा ह्यूमन बींग ही हम लोग फिर से बना सकते हैं, बिकॉज वी कैन यूज दिस स्टेम सेल्स, है ना, टू रीजनरेट अनदर पर्सन। तो फॉर दैट लाइक दैट बिकम्स अ बिट लाइक that will be great as well as थोड़ा सा स्केरी भी होगा वो चीज़ सुनने में। डू यू guys नो अबाउट दिस क्लोनिंग, जेनेटिक क्लोनिंग करते हैं, आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? अभी के टाइम पे आई थिंक ह्यूमन क्लोन आई थिंक अभी किया नहीं, लेकिन एक शीप थी, शीप का क्लोनिंग किया। आई डोंट नो मच अबाउट ह्यूमन की ह्यूमन का भी किया है कि नहीं किया। एक शीप में लाइक एग्जैक्टली एक शीप थी, उसका जेनेटिक मेकअप जो था
मेकओवर तो उसको उसको लिया एंड उसको उसको पूरे का पूरा कॉपी किया एंड दैट वाज इंजेक्टेड इन in like into a sheep and that she gave birth to another like to a child and क्या calf कहते हैं ना शायद and to a calf and उसके बाद में it grew up and it was exactly the same जैसे वो दूसरा वाला था तो it was like a clone exact एक clone बना दिया था उसका तो ऐसा मतलब something like that can be performed where we can make complete clone of a person by completely copying the whole genetic makeup of an individual तो पूरा का पूरा genetic information जो है उसके DNA में that can be completely copied and that can be like because of that another clone can be made of that person so that is again that is also possible right now uh, okay so लेकिन लेकिन अभी तक this was all about the arthroplasty and last one we can talk about some kind of like total hip replacement that is the total hip arthroplasty or we can talk about total knee arthroplasty so total knee arthroplasty में we can see this ki performed in the individuals more than 50 years of age not in like contraindicated in less than 50 years and इसके अलावा if the person is highly obese या फिर we can say कि there is a high amount of compression on the hip or the knee joint so in that case it might become a bit difficult so we might need to ask the person to lower their body weight so as to be able to go for this arthroplastic surgery so that can be the contraindication so इसके अलावा we can talk about these instruments or these tools that is this one is the femoral component जो कि हमारा distal femur के साथ में attach हो रहा है likewise we can talk about this T-shaped tibial component or tibial base plate this is the plastic spacer between both the structures and this is the patellar button that can be used in place of the patella and this mimics the shape of the knee joint and it can be used in case of total knee replacement but of course it needs to be removed after 10 or 15 years of after the surgery because it will of course ये एक time के बाद में it will get affected and it needs to be replaced by a new one okay so these all can be used in case of total knee replacement and एक चीज और थी कि these all structures these all tools made up of these are made up of titanium का बना होता है titanium is a particular you can say एक metal होता है जो कि which is very hard है ना कोई बताएगा hardest metal कौन सा होता है which is the hardest metal in like जो कि अभी तक हमें पता है that is hardest substance that is the diamond na diamond is the hardest substance that we can talk about लेकिन diamond of course it can be used it is highly expensive that's why we go for titanium so titanium भी it can withstand a high amount of this अगर कोई भी उसके ऊपर कोई एसिडिक लग से कोई हार्मोन अगर कोई इफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर ऑटो इम्यूनिटी अगर इफेक्ट कर रही है या फिर कोई भी तो वो काफ़ी विथस्टैंड कर सकता है अगेंस्ट दैट इट विल नॉट गो इनटू रस्टिंग एंड ऑल दैट तो दैट्स व्हाई द टाइटेनियम इज यूज्ड quite often in these cases ठीक है okay so with that we are done with the ortho as a whole ठीक है any doubt till this point arthroscopic surgery orthotics and prosthesis we talked about the amputation different names for the amputation that is important and cervical rib and osteochondritis Paget's disease osteopetrosis and all these conditions and achondroplasia ओके तो आई थिंक अभी तक बहुत सारी कंडीशंस हो गई है पिछली पिछली वाली जो लास्ट क्लास जो थी एंड ये वाली क्लास को लेकर कंडीशंस बहुत सारी हो गई इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि इन सब टर्म्स को कहीं पे आप नोट डाउन करो उनको कहीं पे डॉक्यूमेंट करो एंड उसके बाद में जस्ट गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन दैट नथिंग बेटर देन दैट है ना ओके लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग इट एंड जस्ट अ सेकंड ओके ग्रेट एनी डाउट नहीं ठीक है ओके देन लेट्स वाइंड इट अप एंड आप लोगों ने कुछ डाउट सेंड करे हुए आई विल जस्ट रिवर्ट बैक टू यू आज मैं सबको सबको रिप्लाई कर दूंगा कुछ लोगों ने कुछ दिनों से सेंड करे हुए मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बट आज आई विल टुडे आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड और कुछ हाँ इसके अलावा वी विल बी स्टार्टिंग विथ न्यूरो from tomorrow's class ठीक है तो we'll be starting with the neuro anatomy basic we'll be talking about all these fissures and sulci and gari इसके अलावा we'll be talking about Brodmann's classification
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नंबरिंग दिया गया था, उसके बारे में विल टॉक अबाउट दैट। अलग अलग लोब्स के बारे में हम बात करेंगे, अलग अलग लोब्स के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, क्या 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 फंक्शन कौन सा लोब करता है, मेजर फंक्शन। इसके अलावा थोड़ा बहुत कनेक्शंस के बारे में हम बात कर लेंगे। ग्रे मैटर, वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर के अलग अलग टाइप्स क्या क्या होते हैं, एंड उनके फंक्शंस क्या होते हैं, एंड किस तरह से वो कनेक्ट करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स को, वो सब के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे कल। एंड मे बी शायद सी एस एफ वगैरह भी हम टच कर लेंगे अगर अगर पॉसिबल हो पाया कल, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। आई जस्ट वांट कि एक बार आप थोड़ा बहुत देख लेना कि स्लाइड में क्या क्या दिया हुआ है, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स इन टुमारोज क्लास, ठीक है। कल सैटरडे, हाँ ठीक है, कल हम क्लास ले लेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. ओके, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल, आई गेस। ऑर्थो में like, अभी तक मैं जितना जितना फिगर आउट कर पाया हूँ, मेरे को इतना समझ आ रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें मतलब जितना बेस्ट पॉसिबल जो मैं समझा पा रहा हूँ, बट स्टिल पार्डन मी फॉर दिस अगर अगर कोई चीज़ अगर इफ़ आई एम अनेबल टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग, एंड यू कैन लाइक गिव योर सजेशन कि अगर ऑर्थो को थोड़ा और बेटर किया जाता है, बिकॉज ऑर्थो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत ना मैं थोड़ा बहुत ये चीज़ होगी, मतलब इसको इसको समझाया कैसे जाए, मतलब इसमें तो चीज़ें सारे के सारे कंसेप्चुअल है, अनलाइक अदर सब्जेक्ट जहाँ पे चीज़ें स्टिल मतलब कंसेप्चुअल है। इसमें इसमें चीज़ें जो है वो कंसेप्चुअल कम है, ऑर्थो में बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं। स्टिल इट्स ग्रेट कि आप इसको अगर इट विल बी ग्रेट अगर आप नोट डाउन करो उन चीज़ों को, एंड उसके बाद आप इसको रिवाइज करते जाओ। दैट लाइक आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन बी डन, है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।